बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज, आपकी खिदमत में एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हूं। आई एम श्योर आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड आई एम श्योर जिससे भी वीडियोस हम लोग बना रहे हैं इससे आपको फायदा भी हो रहा होगा, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक द वीडियोस इन सच अ फॉर्मेट कि किसी न किसी तरीके से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले या एक नया व्यू थॉट मिले आपको सोचने के लिए। आज के हमारे मेहमान हमारे साथ पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं, शफात हाशमी। ही इज फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड। हमने इनसे बात की थी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कि हाउ द मार्केटिंग वुड गो इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, बट आज के एपिसोड में हम इनसे बात करेंगे अबाउट द लोकल एडवर्टाइजमेंट। क्या डायनेमिक्स होंगे, किस तरीके से चेंजेस आएंगे और क्या हम उसके अंदर देख रहे हैं। सो लेट्स वेलकम शफात। अस्सलाम वालेकुम शफात, कैसे हैं आप? Walaikum assalam, Asif bhai, as always, keeping well and keeping good. Thank you once Great. again for honoring me at your show. Great. Thank you once again for sharing time. Shafaat bhi, last time also you were on our show, and that was probably a month or so ago, when the lockdown was like almost started, and now the lockdown has gone like more than 6 weeks, and now we are expecting it to even last further. So how do you see the marketing dynamics, the advertisement dynamics would go? I think it completely depends in the uncertain situations because what COVID-19 has actually created is uncertainty. True. And because of uncertainty, we can't really point our finger that when it's going to stop. So lockdown will will probably continue in most of the countries by a week, and then another extension by another 10 days. So it completely depends. But during this time, I think marketing dynamics have completely changed. We are going through a transformational and transitional phase True. in marketing alone. True. So, when we talk about marketing, we talk about the 4 Ps or the 7 Ps, whatever one might believe in. And if we look at the 7 Ps, I think all 7 Ps have somehow been affected. True. Product, let's start with product. Products which were relevant at one point of time and were not value driven are no more relevant in the market. So luxury products have taken a hit. People need to talk about value when it comes to product. Product is no more only taste and style, but cleanliness and hygiene has become a serious concern when we talk about products. And minimum human interaction during the production of the product and packaging of the product and delivery of the product is of a big concern, which Definitely. was never there before. Definitely. So then let's move towards the place or distribution channels. Now, as you know, because of the lockdown, the distribution channels and the retail has definitely been affected. We are not talking about traditional retail marketing where we were getting shelf space and things. It's more of an online ordering setup. So whatever the brands were paying earlier to retailers and mega stores are now being paid to mega websites for promoting their product. So therefore, it's not only the physical product, but uski wajah se, because you cannot showcase a physical product as it is, which you can touch and feel on e-commerce. So it is more about how beautiful of a mock-up do you create of your 3D product and put it up there on e-commerce. So advertising and placement and distribution has obviously changed. Supply chains have to be improved and have become perhaps a little bit more efficient. Now let's come towards pricing. Pricing, as you know, prices, I mean, a classic example is of the tourism industry, airline industry, hospitality, fashion brands, cosmetics, apparels, and real estate, and banking products. So the pricing has definitely gone down, has reduced, and there's a hard hit on the price because of the negative consumer sentiment. So प्राइसिंग जो है वो जब तक अब बंडल ऑफर्स एफिनिटी मार्केटिंग नहीं होगी तब तक हमारे लिए इन प्राइसिंग को रीएडजस्ट करना और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूएस डॉलर कहाँ पे जाता है, येन कहाँ पे जाता है, because most of the raw materials are being imported from China, then we are dependent on certain imports from the US. So therefore all of these things will affect the overall pricing of our products, and depending on what kind of inflation rate do we expect, which I believe is going to skyrocket in the upcoming few months also. So then we come about promotion. A promotion is one of the things that we all discuss about. Advertising, when people are uncertain about their jobs, about their income, about their revenues, and so goes with the business community also. So therefore, it is not a time when people are spending highly on any unwanted wishes or wish list. Okay. It's the time of survival, and therefore promotions can only be relevant enough if they really cater to a certain basic need.
And therefore, for other brands who are targeting a niche or a certain luxury set, becomes completely irrelevant as of now, because there's no point advertising it as we speak, just because of the overall fear factor, the psychographics, the psychological impact of this whole pandemic and the lockdown. All these things, they all add up. So True. the sentiment is not positive. Let's be about it. So True. for now, it's not really about it's not really that we should promote the products. Yes, certain FMCGs, pharmaceuticals, and they can come up with a PR campaign perhaps. Then we talk about people, processes. Now, if we talk about people, people are working from home, especially in the services industry. It becomes more relevant, because service industry, it is all about people. When we talk about marketing, True. so be it your customer services guy, customer support guy, they definitely require a lot of training, and they also require a lot of soft skills development to become even more appealing, and increase their chances of conversions or lead generations, which is essentially online. So you require more Definitely. skills now, reaching Definitely. out and finding out new segments and new markets. And then we talk about processes. As you know, it also has an impact on processes. And Yeah. obviously, there's a work from home culture. It requires honesty, integrity, certain kinds of softwares for monitoring the performance, and all the rest of it needs to be applied. So there is investment over investment over investment when we talk about marketing as a whole, and the COVID-19's impact on marketing and advertising industry. Definitely. Actually, Shafaat bhai, as you have mentioned, advertising dynamics would be changing. So when we advertising comes into our mind, the first thing is a TVC or a billboard. Is advertising only based for a TVC or a billboard, or it's something extra? You see, advertising is a vast domain. Okay, advertising is literally that you have something to sell, be it a product or a service. Yeah. Okay, and you need to advertise it through two key things. Number one is the content, which is your creative and artwork. How do you want to present it? And number two are the media channels through which you wish to promote it. So these two things together, we call that advertising. True. Now when we talk about advertising, advertising dynamics have obviously changed. It is definitely not limited to only TVC or radio or outdoor. It was relevant, a time ago, especially in Pakistan, because we had so many channels, and we have a lot of people going out, and outdoor has been a super hit. But again, it depends. Are you looking for conversions? Are you looking for promotion? Are you looking for brand awareness? Are you looking to reposition your brand when you talk about rebuilding brand equity? So for each of those, certain things needs to be done. So for example, if I'm a bank and I want to reposition my brand as a really international global brand, I need to be out there on Bloomberg and CNN. So Definitely. TV channels become relevant to me. Okay. But if I'm just a small SME and trying to, play in a certain country, then I might have to look for local channels, and might not even go there. I might just go completely online. So what we need to understand right now, the advertising dynamics are somehow changing, and over the time, the eyeballs and the viewership has moved, and the customer preferences are also changing and transforming, especially during these times. Okay. अच्छा, Shafaat bhai, as you mentioned, if we're a mass scale brand, so we can go to like CNN, BBC, and for other channels also. So if we talk about the service sector or the manufacturing concerns, so how would you correlate between both of these? के ज़्यादा service sector के लिए advertising effective होती है, मुश्किल होती है, ये क्या medium use होना चाहिए for a service sector and for a manufacturing concern? There is a separate subject which is taught known as services marketing. Yes. Now, services marketing is a completely different domain. Now, as you know, that apart from me having an advertising agency, we are into investments and we sell services. Okay, Yeah. we are into financial services, and we also have a lot of clients with our agency who are essentially focused on services like international coaches, trainers, and banking sector and financial services people, even real estate services, brokerage services and insurance guys. Yeah. So the key difference is that in one place there's something tangible, and in another place there's something completely intangible. Intangible, Okay, right? so the perceptions somehow are changed. What really matters is to integrate your marketing collaterals and tools with your sales.
So for example, you might have a beautifully packaged product when it comes to manufacturing, and it is properly placed as well. But when you open the product, the usability has issues, or the shelf life has issues, or it's not properly advertised. It doesn't appeal to the right segment. The communication through which you have advertised is not really relevant. So it all falls down. True. On the services angle, what you need is you might have a beautiful real estate brochure and a bespoke website, an excellent promotional video about your real estate project. But the person who is sitting across the investor's table or a prospect client's table is not properly trained and cannot present those materials properly, it's a fail. Definitely. So the key is how you gel in both the sales and marketing together and then push the product across, because bottom line, the only objective of marketing and advertising is revenue generation and sales. Definitely. Be it through product positioning, repositioning, brand positioning, brand awareness, or through promotions, hardcore promotions, or affinity marketing, or digital marketing, whatever you may call it. Shafaat, as everyone knows that we are passing through a very tough time. So what do you suggest for a newcomer or for a small SMEs? Is it a good time for them to advertise right now? If so, that what are the mediums that they should follow? किस तरीके से उनको अपने आप को करना चाहिए? बल्कि इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कहूंगा कि इसको हम सेक्टर वाइज डिफाइन कर लेते हैं. लेट्स सपोज कंस्ट्रक्शन को आजकल गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट दी है और काफी उनको सपोर्ट किया उन्होंने. So what are the advertising mediums for a small medium enterprise dealing in a construction industry? What are the mediums that they can work on? You're absolutely right. I think there is not one single vaccine or formula for all sectors during these times, right? There are different treatments and how you need to treat them based on each personal business case study. Now, having said that, okay, construction sector, government ne khol diya, but honestly speaking, I don't even understand कि 1.5 साल से वो बंद था और अब उस टाइम पे वो सेक्टर खोल दिया जिस वक्त उसकी रेलेवेंसी जीरो है. The reason being because अभी when we are talking about working from home, so आपका working from home culture जब creep in करेगा इंडस्ट्री के अंदर, तो मुझे बताएं कि कमर्शियल और रिटेल की सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस कितनी रह जाएगी मार्केट में. ओके, आई मीन आज के दौर में अगर कोई कहे कि मैं कमर्शियल ऑफिस स्पेस की पूरी बिल्डिंग खड़ी करना चाहता हूं, इट जस्ट मेक्स नो सेंस because people are actually vacating commercial spaces. Same goes with retail. A few days ago, some party from Karachi has announced that we will not be charging rentals to our, retailers or tenants. So, when we look into this, I think construction industry जो है, उसकी टाइमिंग शायद इससे पहले होनी चाहिए थी when they should have opened. अब right now, अगर आपका कोई real estate project and you want to, advertise it, there is no point doing it. True. Because people are holding on to the money, people are True. Holding on to the assets, और जो existing लोगों का जिनका already real estate portfolio है, उनकी already जगह खाली हो रही हैं, और people are failing to pay the rents. So True. Why would anybody go and invest into a real estate sector that also जिसकी delivery अगर off plan है तो 3 साल बाद या 5 साल बाद होनी है. Doesn't make sense. So real estate sector is it a complete halt? I mean, to me it doesn't make sense. Yes, for a government project, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने वो हाउसिंग स्कीम खड़ी करनी है और उसके लिए लेबर को एम्प्लॉय करना है, तो दैट्स हिज कॉल. It doesn't, but for the private sector, I don't think it has made any impact by now. अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं छोटे बिजनेसेस और एसएमईज जिसका आपने सवाल पूछा. अच्छा, स्पेसिफिकली ना यहाँ पे मैं एड्रेस करना चाहूंगा कि रिटेल सेक्टर हमारा काफी ज्यादा ग्रो किया है इन दिनों में भी. ऑनलाइन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, ग्रोसरी की ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा हुई है. हमारी रिटेल जो अपैरल ब्रांड्स है उनकी ऑनलाइन के डायनामिक्स काफी हद तक चेंज हुए हैं. सो व्हाट आर द डायनामिक्स दैट दे शुड फॉलो? अच्छा, मजे की बात है कि ऑनलाइन शॉपिंग ग्रो हुई है लेकिन प्रोडक्ट सेल्स ग्रो नहीं हुई. ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस. पहले जब नॉर्मल दिनों के अंदर आप जब फिजिकल शॉपिंग कर रहे थे रिटेल में, तो द रिटेल हैड गॉन वाज रियली गुड, और ऑनलाइन जो था वो लेट्स से 5% या 8% या 12% टोटल पोर्टफोलियो का रिप्रेजेंट कर रहा था. अब वो 12% या मे बी अब वो 28, 30, 50% रिप्रेजेंट कर रहा हो, लेकिन जो ओवरऑल रेवेन्यू है that has definitely it has shrunk, gone down. Okay. All right, now so with all these challenges, again when we come to fashion retail industry,
it's a good idea to go online. You know, this should have been adopted even earlier. And some of the leading brands did adopt it earlier. And somehow they are, you know, in a better state compared to those. But then again, the timing is not right. Okay. You as a small businessman, okay, मुझे बताएं कि डिलीवरीज में कितना इफेक्ट हुआ है फूड डिलीवरीज में. बहुत सारे लोग थे जो फूड पैंडा पे और बाकी एप्स के ऊपर होम डिलीवर करवा रहे थे. बिल्कुल. होम डिलीवरी तो चल रही थी, ई कॉमर्स पोर्टल भी चल रहा था. अचानक से इट्स नॉट वर्किंग आउट. Zameen.com, जैसे आपने कहा, कंस्ट्रक्शन का पोर्टल चल रहा था. नाउ दे आर लुकिंग फॉर अ मर्जर, and I think they have probably merged as well. The news has come out. So same goes with, you know, other apps like Cheetah, and I think they can all give you certain numbers कि yes, उनके पास registrations तो बहुत ज्यादा clients की आ रही हैं, लेकिन जो sales through है वो put through उतना उस तरह से नहीं आ रहा और conversion उस तरह से नहीं आ रही. It is going to take some time, and because this completely depends again on what I'm trying to stress upon is the customer segment. However, this is the right time, excuse me, this is the right time when small, medium enterprises and small businesses can actually sit back, rebrand themselves, and have a social media presence or a digital presence. Because digital presence अगर आप आज बनाएंगे तो वो 3 महीने 6 महीने बाद कहीं जाके उस मीडिया के अंदर एब्जॉर्ब होगी. बिल्कुल. राइट. लेकिन अगर आप वो आज भी नहीं करेंगे तो 6 महीने बाद जब मार्केट ओपन होगी तो you still will be absolutely nowhere. True. Right. Very true. Very true. This is what my advice is. अच्छा शफात जी, there's one more very important point that I would like जिस पे आप इस पर रोशनी डालें. Consumer research हमारे यहाँ एक culture नहीं है, but in the world there are like big agencies and they are specifically required कि जो वो consumer psyche demographics, consumer psyche service करे होती हैं. कितना ज़्यादा रोल है इसका हमारे conversions के अंदर if we talk about these researches and this data? देखिए, consumer research has pretty much been there even in Pakistan, and you know, big companies like especially the multinational corporations have always done a marketing research, or at least have always conducted a marketing research, and some of their decisions have always also been based on the marketing research data, especially when we talk about the pharmaceutical industry, and they do all kinds of global and local research and find out what are the next diseases which will be coming, what is the status of the healthcare sector, immunity logon ki kaisi hai, which antibiotics would work, which would not work, what kind of viral is coming. So based on that, they actually plan their production and sales and marketing and many things. Same goes with a lot of other brands as well. They do research that what kind of motifs or designs would actually work, or what prints would actually work when they launch their line. So same goes with, you know, product fit research, especially in jeans wear and t-shirts wear. So when you talk about Levi's, Outfitters, and few other brands, you know, I don't know यहाँ पे कौन से हैं. हमारे ज़माने में तो Crossroads होता था, Stonehenge होता था. I think they're no more there. So वो research हुआ करती है. अब the problem here is कि जो corporate sector है वो तो consumer research conduct करता है और somehow उसको apply भी करता है. जो ब्रांड मैनेजर्स हैं वो अप्लाई करते हैं, यू नो, पैकेजेस वालों के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, एंड दे डेफिनेटली दोस ब्रांड मैनेजर्स दे कंडक्ट द रिसर्च. जो एसएमईज हैं और जो लोकल बिजनेसेस हैं, इवन दे आर लार्ज बिजनेसेस, ओके, दे आर फार अवे फ्रॉम marketing research. True. They do not believe in it. They do not understand it. They do not know what a sample size means. They do not know how to even structure a research. अब वो जो बड़ी कंपनीज हैं उनको तो वो अफोर्ड कर नहीं सकते. जो छोटी कंपनीज हैं पाकिस्तान में उनको सिरे से रिसर्च करनी नहीं आती. आज की रिसर्च जो है वो क्वेश्चनर्स के साथ नहीं है कि आप एक फरला जो है वो लोगों से फिल करवाना शुरू कर दें 12 सवालात का. you know, आज we have to integrate technology. Yes. Okay. Yeah. We need to put up a small camera, let's say on the shelf, and see कि consumer eye movement कैसी है. वो पहले किस प्रोडक्ट को शेल्फ पे देख रहा है, कौन से कलर्स उसको अपील कर रहे हैं, वो आई लेवल की प्रोडक्ट को पहले पिक करता है या नीचे से प्रोडक्ट को पिक करता है या ऊपर से पिक करता है. दिस इज रिसर्च. we talk about what are the consumer preferences. I mean, आज से 5 साल पहले जो फेसबुक आपको टूल्स देता था एडवर्टाइजिंग के,
जिसकी बेस पे आप डिजिटल मार्केटिंग करते थे, टारगेटिंग करते थे अपने एड्स की, उसमें और आज के टूल्स में जमीन आसमान का फर्क है। ट्रू ट्रू। नाउ इट हैज बिकम मोर एंड मोर, बिग डेटा की बेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मजीद सेगमेंटेशन आप कर सकते हैं, मजीद टेस्ट कर सकते हैं, माइनर चीजों को प्ले करके और उनको मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने अपनी कंज्यूमर की रिसर्च नहीं की तो उसको यही नहीं पता कि उसने टारगेट सेगमेंटेशन कैसे करनी है। ट्रू। और उसने अपनी प्रोडक्ट मार्केटिंग कैसे करनी है। अब आप बहुत सारे इश्तिहारात देखते हैं, टीवी के ऊपर आते हैं, और पिछले दिनों मैं एक इश्तिहार देख रहा था जिसपे सारी फैमिली जो है वो टोपी पहन के अफ्तार कर रही थी। आई मीन 25 साल पहले, शायद 20 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज के दौर में आप सारा खानदान टोपी पहन के कौन इफ्तार करता है, यू नो। और वो जो एक्टर हैं जो कि बैठ के दुआ मांग रहे हैं और थोड़ा सा रोने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो that acting was so poor that I wonder what the director has actually done to it. So when can we actually come out of it? When can we show that there is this youth who sits in their jeans and t-shirts and still do a beautiful iftar, और वो उन्हीं जीन्स के अंदर घर के अंदर सारे लोग आपस में नमाज पढ़ें? You can still have an iftar ad, you know. Yeah. Okay, but it can become more relevant, okay, unless you're targeting a certain segment. So you know, these are the things which helps you position your brand better. It helps you package your brand better. It helps you, आपने एक ad campaign चलाई, उसके बाद उसकी research होनी चाहिए कि उस ad campaign को लोगों ने कैसे consume किया, right? आजकल एक ad आता है, जैसे रमजान चल रहा है तो कोई ad आ रहा है जो कि culturally fit नहीं है, it will not work. अच्छा शफात भी, यहीं से इसी पॉइंट को मैं आगे लेके चलता हूँ। क्रिएटिव कंटेंट किसी भी ऐड की जान होती है। सो हम लोग आज तक वो इतना अच्छा क्रिएटिव कंटेंट डेवलप क्यों नहीं कर सके जो कि अपने साथ लोगों को इन्वॉल्व कर सके। मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूँ। कुछ अर्से पहले फैसल कुरैशी वगैरह ने यूफोन के कुछ एड्स का कॉन्सेप्ट दिया था, एंड दे केम अप विद वेरी गुड आइडियाज। सो व्हाई इज दैट कि यंगस्टर्स हमारे पास इतने टैलेंटेड नहीं है, हमारे पास लोगों का स्किल सेट नहीं है? क्या वजह हम लोग आज के एड्स इतने इन्वॉल्विंग और इतने टची क्यों नहीं बना पा रहे? इसकी 4-5 वजूहात हैं और स्टेप बाय स्टेप में लेके चलूंगा। वजह नंबर 1 इज अ ग्लास सीलिंग। आज भी कुछ कंपनीज के अंदर ऐसे हेड ऑफ मार्केटिंग और डायरेक्टर मार्केटिंग बैठे हुए हैं जो कि अभी तक टिपिकल कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आए, और उन्होंने अल्टीमेटली क्रिएटिव और एड को अप्रूव करना है। ऑलराइट। दूसरा मसला जो है, वही ग्लास सीलिंग का हिस्सा जो है वो लोकल सेठ साहब है, ठीक है जी, जिन्होंने उस इश्तिहार को अप्रूव करना है। उन्होंने लाल पीले सब्ज रंगों से बाहर नहीं जाना, उन्होंने ग्रेडियंट बेस्ड लोगो से बाहर नहीं जाना, उन्होंने नहीं समझना कि दुनिया में ग्रेडियंट बेस्ड लोगोज नहीं बनते, राइट, ठीक है जी। उन्होंने अपनी जो एक खास टारगेट मार्केट है और जो खास उनके इंस्पिरेशन सेट्स हैं और प्रेफरेंसेस हैं, उनसे बाहर नहीं होना। अच्छा, दूसरा जो मसला है वो क्या है, वो ये है कि जो नई यूथ आ रहा है और नए जो यंगस्टर्स एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में आ रहे हैं, उनका एक्सपोजर जीरो है। उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो अपनी सॉरी टू से, वो अपनी टिपिकल पाकिस्तानी लोकल कम्युनिटी और लोकल कस्टमर सेगमेंट से बाहर कुछ ना उन्होंने देखा है और ना उससे बाहर उसकी वजह से कुछ सोच सकते हैं। एक्सपोजर नहीं है। सो दिस इज एक्सपोजर नहीं है, दिस इज मसला नंबर 2। अब मसला नंबर 3 भी ले लीजिए। मसला नंबर 3 ये है कि एडवर्टाइजिंग इज as equal of a risk taking as doing business itself. Definitely, you never know what can click out. Right, you never know कि उसका कोई बैकलैश भी आ सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि क्रिएटिव कंटेंट वाली एजेंसी को तो पैसा देना ही नहीं है, बिकॉज आपने 35,000-50,000 रुपए का डिजाइनर रख लेना है, उसको पूरा करियर पाथ दिखाना है अगले 2 साल का अपनी कंपनी में, ठीक है जी, और उसको महीने के अंदर अपनी कैंपेन बना के उसके बाद उसको फारिग कर देना 50,000 रुपया देके। ओके, क्योंकि वो जो क्रिएटिव है वो ये लोग टूल ऑपरेटर हैं, या आज के जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं ये टूल ऑपरेटर्स हैं, ये क्रिएटिव पीपल नहीं है। क्रिएटिविटी में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक कंटेंट और एक आर्टवर्क। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने आर्टवर्क को कंटेंट से रिलेट करना होता है और कंटेंट को कॉन्सेप्ट या आर्टवर्क से रिलेट करना होता है। अब जो ग्राफिक डिजाइनर आ रहा है उसको कंटेंट की अलग में नहीं पता, और जो कंटेंट वाला है उसको डिजाइन और सिमियोटिक्स के बारे में और स्टाइल की कुछ सेंस ही नहीं है, कोरिलेशन नहीं है आपस में दोनों का, कोरिलेशन नहीं है। अब यहाँ पे लैंड हो जाता है आर्ट डायरेक्टर या क्रिएटिव डायरेक्टर। अब वो जो आर्ट डायरेक्टर तशरीफ लाते हैं वो एक अपने उनमें प्रोफेशनलिज्म की किल्लत है, क्योंकि उन्होंने अपने खास पर्सनल स्टाइल को तो प्रमोट करना है,
बोलने का, पहनने का, इन सारी चीजों का, और एक सोफिस्टिकेशन या जो भी है, कई दफा एग्रेशन से किस तरह से उसको तो प्रेजेंट करना है। उनकी अपनी पर्सनालिटी जो है वो ब्रांड्स को और कंटेंट और बहुत सारी चीजों को ओवरकम कर रही होती है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द डायलेमा इन आवर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। अब जो सेठ साहब हैं, उन्होंने क्रिएटिव पे जब पैसा नहीं खर्च करना, तो क्रिएटिव जब बुरा बनेगा तो ब्रांड रिकॉल नहीं बिल्ड होगी। अब वो मीडिया के ऊपर बेतहाशा पैसा लगाएंगे। मैंने और बड़ा प्राउडली लोगों को बताएंगे जी मैंने 50 करोड़ रुपए की कैंपेन कर दी है, पूरा पाकिस्तान ब्रांड कर दिया है, आप मेरे बोर्ड लगे हुए हैं जी, हर टीवी पे मैं ऐड दे रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद वो डिजिटल पे भी आ जाएंगे और कहेंगे जी मैंने 10 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की डिजिटल की कैंपेन भी कर दी। लेकिन वो ब्रांड अलाइनमेंट नहीं होगी ना। लेकिन जब क्रिएटिव बुरा है तो आप मीडिया पे जितना मर्जी डालते जाएं, उसका वो रिजल्ट वो हैमरिंग से तो आ जाएगा, लेकिन रिकॉल बिल्ड नहीं होगी। रिकॉल मैं आपको बताता हूँ, डेंटोनिक की ऐड की रिकॉल बिल्ड हुई, वेरी नाइस। स्टेट लाइफ की ऐड की रिकॉल बिल्ड हुई। इवन फॉर दैट मैटर आपके जो मास्टर के ऐड आते थे, जो आपके मल्टी फॉर्म वगैरह के ऐड आते थे, वो आज तक हमें याद है। एब्सोल्युटली। तो वो बहुत सारे और एड्स हैं मुझे अभी भी, यू नो, इसका वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स काटिया, उसके एड्स मेरे जहन में बैठे हुए, व्हेन दे शो दैट यू नो लायनेस और चीता कमिंग इन एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिएटिव्स, यू नो, उन्होंने मेहनत की हुई है, सीजीआई पे 3D को इंटीग्रेट करके ग्रीन स्क्रीन पे काम किया हुआ है, कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया हुआ है, एक लाइफस्टाइल को, एक ब्रांड को एक जगह पे पोजीशन किया हुआ है। So there's a certain brand recall. अब हमारे यहाँ पे क्रिएटिव में जब हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं इंडिया को, ओके, बिकॉज दैट इज द सेम कंट्री, वी शेयर प्रीटी मच द सेम कल्चर एंड सेम लैंग्वेज। अच्छा, वो लोग जो हैं वो बिलो द बेल्ट ऐड देने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली, आई मीन आई एम नॉट शाय अबाउट इट, कि उन्होंने भी 2 पैक लगाने के बाद और 4 पक्के लगाने के बाद उन्होंने भी एक क्रिएटिव बना लेना है विच विल बी बिलो द बेल्ट, एंड वो समझते हैं कि बिलो द बेल्ट से शायद रिकॉल बिल्ड हो जाएगी। रिकॉल बिल्ड नहीं होती, आप बहुत सारे बड़े सेगमेंट को ऑफेंड भी कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप एक केस स्टडी तो फॉर श्योर बना लेते हैं, नेगेटिव पीआर से भी कुछ उठा लेते हैं, लेकिन आप रिकॉल या रिलेशन ब्रांड के साथ बिल्ड नहीं करते। ब्रांड्स जो है और जो क्रिएटिव है वो है मोहब्बत का नाम। क्रिएटिविटी हैज टू कम फ्रॉम द हार्ट, it has to be mixed and compounded with the brain rational. शफात जी ने कोक की कैंपेन थी which was like 2 years back, जिसमें उन्होंने कोक की बोतल के ऊपर अपना नाम प्रिंट करके दिया था। मेरा ख्याल है कि हमारे कल्चर के लिहाज से it was a very good campaign, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को, लाइक मुझे याद है कि कई लोगों को मैंने जाके देखा, वो स्पेसिफिकली कोक नहीं भी चाहिए होती थी, वो अपना नाम ढूंढते थे। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि पेप्सी से कोक पे सिर्फ इसी वजह से कन्वर्ट हुए क्योंकि हमारे नाम की है। So probably this was a good. It worked. It was an international campaign. Yeah, Asim bhai. Yeah, I know. It was internationally executed. Yes. And it was a brilliant creative, and for sure it is not done by a Pakistani agency. It was done by international agencies who had actually, they wanted to create a relation between the customer and Coke. True. And they were talking about a very personalized relation. Yeah. And they also showed their flexibility and as a truly international brand कि you know हमें अपने पैकेजिंग के ऊपर भी आपका नाम लिखने की से कोई मसला नहीं है, पर्सनलाइज्ड सर्विस दी है, वो ब्रांड गाइडलाइंस के ऊपर और ब्रांड पैकेजिंग के ऊपर शोर मचाती फिरती है। और ये उसकी रिस्पांस जो थी, उसकी रिस्पांस पेप्सी ने की जब पेप्सी ने अपने 60s और 70s की पैकेजिंग को रीलॉन्च किया जी बिल्कुल cans mein, and that also became a super hit. Yeah, okay, because they then said, okay, we are going to target another way and we're also going to rework on that. So you know, these are people that through packaging, through certain promotion, they try to work and create a thing. Again, you have actually you know, endorsed what I was saying. It is a heart to heart relation. True. Brands have a personal relation and that needs to be highlighted while managing our communications. अच्छा शफात भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आजकल एक बज़वर्ड चला हुआ जी, वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग। दिखने में तो बहुत बड़ा एक वर्ड लगता है, लेकिन हाउ कैन वी एक्चुअली डिलीवर अ वैल्यू थ्रू एडवर्टाइजमेंट? देखिए जी, वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग जो है उसके 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक ब्रांड कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग है और एक एजेंसी क्लाइंट रिलेशनशिप के अंदर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग है। ठीक है जी। अब हम इसमें पहले ब्रांड और कंज्यूमर की बात कर लेते हैं।
तो कंज्यूमर जो है उसने दो किस्म की वैल्यू देनी होती है, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट में या ब्रांड में, और एक होती है उसकी परसीव्ड वैल्यू। ठीक है, राइट सर। अब वो जो परसीव्ड वैल्यू है वो तो रीपोजिशनिंग के साथ उसको हम वर्क कर सकते हैं, क्रिएटिव के साथ, पैकेजिंग के साथ, कम्युनिकेशन के साथ, अवेलेबिलिटी के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे एज हैं जिसके ऊपर आप एक परसीव्ड कंज्यूमर सरप्लस जो है उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। So therefore that would definitely work. However, when we talk about value driven marketing, when it comes to affinity marketing or bundle offers, so वो promotions को आप attach करके एक value driven marketing, आज के दौर में it is all about value driven marketing. yeah, People still prefer value meals at McDonald's, yeah, right? And value deals. So value always works, and we have to create those value that work. Again, वो marketing research के बगैर नहीं आ सकता. आपने दो चीजों का बंडल कर दिया लेकिन वो दूसरी चीज completely irrelevant है और उसका कोई रिलेशन नहीं है प्रोडक्ट के साथ, so it becomes a complete issue because वो value driven marketing या वो बंडल ऑफर आपकी हिट नहीं होगी. अब हम आ जाते हैं एजेंसीज और कंपनीज या ब्रांड्स के रिलेशनशिप में. आज के दौर में एजेंसीज अभी भी ये समझती हैं कि हम कोई मिलियंस का वो इनवॉइस कर देंगे तो लोग टीवीसी हमें दे देंगे. एजेंसीज आल्सो हैव टू डिलीवर वैल्यू टू देयर क्लाइंट्स. और वो जो वैल्यू है दैट इज कि हम सबको पता है कि विद द एडवेंट ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज बीइंग रेडिली अवेलेबल टू अस थ्रू Fiverr and elance.com and so many other websites, and there is so much material available on iStock, Shutterstock, and so many other websites, and Theme Forest, for example. So uske beech mein what is the role that you play and how do you facilitate? Okay. और वो जो facilitation है वो essentially आपको content से, creative drive से, कंज्यूमर रिसर्च से, इंडस्ट्री के डायनामिक्स की समझ बूझ रखने से और उन सारी चीजों को अमेलगमेट करके एक इन्फॉर्म्ड और रेलेवेंट डिसीजन बना के एक रेलेवेंट मार्केटिंग करना जो है उसके लिए आप एजेंसी हायर करते हैं. मार्केटिंग और उस वही वैल्यू एडिशन है बेसिकली और वही वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग है. सो you can also hire a coach which costs you maybe 10,000 rupees an hour. And then you can also hire a coach which charges you $10,000 an hour. True. But there is definitely value that each of those people give in that 1 hour. Definitely. Shafaat bhai, again, as always, it was a very nice discussion and time का आपके साथ जब भी बात करते हैं पता ही नहीं चलता. And बड़ा मजा है आपके साथ डिस्कशन करके, especially the way that you have like defined the marketing और जो अब हमें देखना चाहिए, जो challenges हमें face आगे आ रहे हैं, जिस तरह से हमें creative side पे जाना है. So probably this gives a new domain जिस पे हम workout कर सकते हैं, and which is actually a very big gap, I would say. We're happy to do it, and if there are any brands who are seeking help, especially during these times, my agency, we have 7 offices. We are more than happy to assist, especially the startup community, also SMEs, established brands, and I'll be happy to advise them and help them in every way possible, through this platform of yours. This is why we have actually come to Pakistan, foregoing big revenues from multinational corporations. Or when Brandbeat opened the office in Pakistan, I came up with a very clear-cut vision, and that was to strictly work with local brands. Great. Because I understand that local brands have the potential, and if we with our international exposure and expertise, if we can make them strong, so strong that they can become unicorns and global exporters, it's not going to only help job creation in our country, but also it will help bring FDIs to our country. And that's our mission of Brandbeat in Pakistan. Thank you, Shafaat, for your time, for joining us. It was really a pleasure. Thank you very much. जी viewers, again, I hope that you enjoyed this episode. इसमें कई चीजें हमें बहुत अच्छी सीखने को मिली हैं और वाकई हमें एक होप मिली है कि there is a lot that we can do in the field of marketing. मार्केटिंग जो कि हमें सिर्फ लगती है कि एक टीवीसी, एक रेडियो या एक सिर्फ बिलबोर्ड या एक अखबार में इश्तिहार ही है. तो आज हमने ये जाना है कि इट्स नॉट ओनली दैट, लाइक देयर आर फ्यू मोर थिंग्स जिसको हम मार्केटिंग कह सकते हैं, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग. आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. इंशाल्लाह जल्दी किसी नए मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.